Hello everyone. As you know that I am doing science and technology and biodiversity previous year questions from civil services examinations. This is part 3 of IAS Prelims 1979. Okay, this is the last video for this year questions. Okay, this is about myself. So let's see the remaining questions of IAS Prelims 1979. Okay, so the first question for this video is after hatching by the young chicks came out of the egg within 1 week, 2 weeks, 3 weeks or 4 weeks. So it is actually 3 weeks. Okay, please remember this. Next question, which one of the following is a fast growing tree? Okay, कौन सा काफ़ी तेजी से बढ़ता है? So it's a teak, eucalyptus, banana, coconut. So it is actually eucalyptus. Eucalyptus it's a fast growing tree और इसको अभी मतलब अब देखेंगे कि पुराने पहले आज से 10-15 साल पहले अगर आप देखोगे तो you'll find lot of eucalyptus tree. बट अभी इसको काट दिया जाता है बिकॉज ये एक्चुअली इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि ये जो ग्राउंड वाटर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा सक करता है. सो दैट्स वाई इट्स नॉट गुड ट्री. ओके, या सो द आंसर इज बी. नेक्स्ट, डिक्रीज इन वाइट ब्लड सेल रिजल्ट्स इन. ठीक है, अगर बॉडी में वाइट ब्लड सेल अगर कम होता है, डिक्रीज होता है, व्हाट हैपन? Decrease in antibiotics, increase in antigen, increase in antibodies, no change. See what happen if there is decrease in white blood cell, then what happen? There will be decrease in antibodies. Okay, so the answer is A. Next question, in India people suffers from anemia ड्यू टू लैक ऑफ. ठीक है, इंडिया में एनीमिया काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है. ये क्यों होता है ये पूछ रहा है. आयरन की कमी से, आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम. देखिए जो एनीमिया होता है इट इज़ एक्चुअली अगर बॉडी में आयरन की कमी है देन ओनली आई विल नॉट से ओनली, तो जो एनीमिया होता है वो होता है. ओके, सो इट इज़ एक्चुअली आयरन, lack of iron, deficiency of iron. Okay, so the answer is A. Next question. Okay, aspirin, okay, derived from the plant, okay, serpentina, is used to elevate pain, elevate high blood pressure, elevate low blood pressure, cure rickets. So okay, so this plant actually is useful to actually elevate high blood pressure. It is actually elevate high blood pressure. Okay, so please remember answer B. Next question, in India it is found recently that incidence of malaria is increasing because, ठीक है, और देखिए ये रिसेंट बोल रहा है, इट मीन्स ये 1979 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे मलेरिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा हुए होंगे. सो इस वजह से ये रिसेंट बोल रहा है. ओके, तो द मॉस्किटो हैव बिकम DDT रेजिस्टेंट. ओके, ऑफ पॉवर्टी इन विलेज, ऑफ पुअर सैनिटरी कंडीशंस, on account of increase in population, it has become possible to maintain cleanliness everywhere. ठीक है, देखिए 1979 का क्वेश्चन है, तो उस समय इंडिया की जो भी कंडीशन रही होगी उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू चूज द ऑप्शन. ओके, तो उस समय एक्चुअली क्या था कि जो मॉस्किटो थे, ओके, दे हैव बिकम DDT रेजिस्टेंट. ठीक है, इस वजह से मलेरिया के केसेस थे उस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था. सो द आंसर इज ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
माउथ एंड फूड डिजीज सॉरी इन कैटल और कॉज ड्यू टू, ठीक है। अभी आई थिंक रिसेंट टाइम में भी और ये थिंक कैटल्स में ये डिजीज पाया गया था। ओके, सो it is what, so they are asking like it is bacteria, okay, due to bacteria, virus, fungi, okay, or penicillium. So it is actually virus, okay, it is due to virus. Answer is B. So mouth and food disease is due to virus. Next question. A body partially floats in vapor then, okay, the volume of displaced liquid in is equal to the volume of the body. The volume of displaced liquid is greater than the volume of the body. Okay, ठीक है, वही चीज बोलेगा, greater है, equal है. Okay, the weight of displaced water is equal to the weight of the body. Okay, the weight of the displaced water is greater than the weight of the body. So this is because of, okay, the weight of displaced water is equal to weight of the body. Okay, so the answer is C. Next question. Permanent hardness of water cannot be removed by boiling or adding caustic soda, distillation, adding soda. ठीक है, जो वाटर हार्डनेस होता है वो किस चीज़ से रिमूव नहीं किया जा सकता, वो चीज़ पूछ रहा है यहाँ पे। सो इट इज़ एक्चुअली अगर हम पानी को बॉयल करते हैं, ठीक है, इफ़ वी आर गोइंग टू बॉयल द वाटर वी कैन नॉट रिमूव द हार्डनेस ऑफ द वाटर, so it is actually boiling. So the answer is E. Okay, next question. In summer, man with excess perspiration feels weak because of loss of more water through evaporation, loss of salt through evaporation, loss of carbohydrates through evaporation, all factors mentioned above. देखिए, ये चीज जो होता है फील समर में जो वीकनेस फील होती है, इट इज ड्यू टू लॉस ऑफ मोर वाटर थ्रू इवेपोरेशन. ठीक है, आप देखते होंगे कि अभी कुछ दिन पहले भी समर चल रहा है. आई ऑल्सो फील द सेम थिंग, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हुआ था. उसके बाद आई फील लाइक वेरी वीक, और मुझे मतलब मैं आया रूम पे और फिर आई वॉज लाइक स्लीपिंग. ठीक है, मुझे तुरंत नींद आने लगा था. ओके, सो इट इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर. ओके, सो द आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टू ब्रांचेस ऑफ अ प्लांट गिव टू डिफरेंट फ्रूट्स, tomato and brinjals. This can be explained by hybridization, by grafting one with other, by nature frac. Okay, by ARC जो भी इसमें दिया हुआ है ANC में, उसको पूछ रहा है. तो एक ही प्लांट के दो ब्रांच हो, उसमें दो डिफरेंट फ्रूट, ऐसा कैसे हो सकता है? So it is actually by grafting one with other. ठीक है, hybridization में नहीं होगा, it is grafting one with other. So the answer is B. Okay. Next, the density of sea water is highest as depth decreases and salinity increases. Depth decreases and salinity increases. Depth increases and salinity decreases. Depth increases and salinity decreases. ठीक, वही increase decrease salinity and depth की बात कर रहा है. Okay, so it is about density. देखिए, it is A. जो density of sea water होता है, depth जैसे हम depth में जाते हैं increase होता है, and salinity increases. ठीक है, दोनों ही इंक्रीज होगा. salinity increases, okay, and
depth increases, both. Okay, so please remember, salinity and depth both will increase. The density of seawater is highest if the density of seawater is highest. ठीक है, जो भी जिस भी तरीके से आप समझ लो, दोनों इंक्रीज होना चाहिए. Next, the function of liver is promote digestion of food, promote respiration, store glucose and glycogen, yeah. Okay, none of these. So I think you know answer this question. It is actually store glucose as glucosan. Okay, so the answer is C. Next question, the temperature of pasteurization of milk is selected so as to kill the microorganisms, kill all bacteria, store if it for long time without coagulation, and kill the microorganism and other harmful bacteria. ठीक है, जो पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क हम लोग करते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है. ठीक है, तो क्यों किया जाता है, वो 4 चीज़ें इसमें दी हुई हैं. सो इट इज़ एक्चुअली डी. ठीक है, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर हार्मफुल बैक्टीरिया. ठीक है, तो ये इसके ही वजह से अगर जैसे दूध को आप 8-10 घंटे ऐसे गर्म करके रख दो, फ्रिज में ना रखो, तो वो फट जाता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करके या फिर कोल्ड करते हैं. आई डोंट नो हाउ टू डू दिस पास्चराइजेशन. मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं एंड फिर उसको इवन ठंडा करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि जो इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो मर जाते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं. तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है थोड़ा बढ़ जाता है. आई मीन ऐसा नहीं कि 10 दिन 20 दिन तक रख सकते हैं, ऐसा नहीं है. बट या जो 8-10 घंटे होता है उसको हम लोग फ्रिज वगैरह में रख के 2 दिन 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन सी दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most important factor for growth of pest in stored grains? Okay, the moisture of grains, the temperature of grains, the moisture and temperature of grains, none of the above. ठीक है, so what is the most important factor for growth of pest in grains, stored grains? It is actually moisture of grains. ठीक है, so the answer is A. Next question, which of the following can be said as theory of Darwin? Survival of fittest and struggle for existence. Weak and strong always maintain a fixed proportion. Different species do not arise by genetic mutation. ठीक है, ये आप थ्योरी ऑफ डार्विन अगर आप पढ़े हुए हैं तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. सो इसमें एक्चुअली ए है इसका आंसर. द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस. ओके, स्ट्रगल फॉर existence. This is nothing but is the theory of Darwin. Okay, so the next question, the term test tube baby implies fertilization of ovum take place in test tube but develop in uterus. Okay, so fertilization of ovum take place in the test tube and develop in the test tube itself. C option, the fertilization of ovum take place in the uterus but develop in the test tube. Okay, fertilization take place takes place in uterus and embryo develop in uterus. Okay, so देखिए कुछ नहीं, इसमें ये पूछ रहा है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबीज होती हैं वो किस तरीके से होती हैं. वो दीज आर द 4 ऑप्शंस. So what happened in test tube babies? The fertilization of ovum take place in the test tube. देखिए टेस्ट ट्यूब नाम में लिखा हुआ है, तो जो इसका फर्टिलाइजेशन होता है
वो टेस्ट ट्यूब में होता है, बट इट डेवलप इन यूटेरस. ठीक है, द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस्ड इन द टेस्ट ट्यूब but it develop in the uterus. So the answer is E. So please remember, test tube बोल दिया, it means the fertilization will take place in the test tube, but it develop in the uterus. Okay. Okay, so this is the end of 1979 questions. I hope you like that. Next class I will come up with the 1980 questions of science and technology and biodiversity. Both is together is given here. Okay, thank you for watching.